on chapter number 2, that is polynomials. Okay, so first assignment में जो questions थे वो 1 mark और 2 marks के questions थे, और उसके बाद जो असाइनमेंट 4 मैंने अपलोड किया है, इन दैट यू विल हैव 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन, ओके, बेस्ड ऑन चैप्टर 2 ओनली। तो इसी तरीके से हम लोग आगे के चैप्टर्स भी कंटिन्यू करेंगे इन द सेम फॉर्मेट। फर्स्ट असाइनमेंट विल बी ऑफ 1 mark and 2 marks question, and second assignment will be of 3 marks and 4 marks question. So each chapter we will solve 2 assignments, okay, just for the revision, because in December we are again going to write down the exams. Okay, so first question of the assignment 3 was the value of k for which -4 is a zero of the polynomial. तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, वी आर गिवन विद द जीरो, और हमको k का वैल्यू फाइंड करना है. सी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर quadratic polynomials. Mostly the question will come from this topic only. Okay, so the value of k for which -4 is the zero of the polynomial. So first we will write down the polynomial. Given polynomial is, and this is the accurate procedure or protocol to write down the answer. Okay, given polynomial is, okay, let us consider the polynomial as p of x, and that polynomial is x square minus x minus 2k plus 2. Okay, so this is the polynomial. Now 1 0 is given. 1 0 of the polynomial is equal to -4. This is one of the zero of this polynomial. As it is a quadratic polynomial, so it will have two zeros. तो उसमें से एक जीरो हमको given है, दूसरा जीरो हमको find नहीं करना, हमको k का value find करना है. See, whenever you want to find the zero of the polynomial, what we do, we equate the polynomial with zero. Okay, so to get zero of the polynomial, equate it with 0. Equate it with 0. ओके, तो अभी हमको एक जीरो गिवन है, तो वो जीरो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे. दैट इज x के जगह पे बस हमको क्या पुट करना है, -4. सो व्हाट इट विल बिकम, -4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी हियर इट विल कम -4 ओनली, माइनस 2k, and this will become -2. See, Aditya, I think so, Aditya only have taken this +2 as it is. It will become -2. Okay, तो अभी ये p of 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. Okay, p of 4 it will be equal to 0. So ये -4 का square it will become 16, and minus into minus it will become +4, and this is -2k minus 2. So add the constant terms, that is 16 plus 4 minus 2, what it will come, 16 plus 4 is 20, 20 minus 2 is 18. So 18 minus 2k, it is equal to 0. So I will shift this 18 to LHS. So what it will become, -18, which is equal to minus 2k. So this minus minus sign will get cancelled on both the sides. So what will be the value of k then? K will be equal to 9. Okay, the value of k will be equal to 9. This is the correct process to write down the answer. Okay, in exam also you will write it like this only. Most of you have written it correctly. Okay, some silly mistakes are there by few students. Now see the second one, the number of zeros of the polynomial from the graph is, okay, graph is given to us and we have to write the number of zeros. अभी यहाँ पे ये ग्राफ चेक करो आप, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट टच कर रहा है टू द एक्स एक्सिस. जितने भी बार वो गिवन ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस हमको मिलते हैं, ये हमको पता है, हमने देखा है फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑफ पॉलिनोमियल्स. सो यहाँ पे ये कितने बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इट इज ओनली टचिंग वन टाइम. ओके, as the equation or polynomial
drawn on graph touches x-axis. Okay, x-axis only once, so it will have only 1 0. It will have only 1 0. See, one student, I don't remember the name, he has directly written only 1 0. See, you have to mention the complete statement. भले ही क्वेश्चन 1 मार्क का हो, बट अगर आप चाहते हो कि आपका मार्क्स डिडक्ट ना हो, तो आंसर इट कंप्लीटली. ओके, गिव द रीजन ऑल्सो व्हाई इट इज 1 0. ओके, 1 0 है ये सबको पता है, बट उसका रीजन भी देना जरूरी है. ओके, so this is the answer for the second one. See the third one. If one of the zero of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k. Again, you will have to find the value of k. Like question number 1 हमने solve किया था, उसी तरीके का है. So again, what it will come here? Given polynomial. Given polynomial is p of x, which is equal to x square plus 3x plus k. Okay, one of the zero of the polynomial is 2. Okay, one of the zero of the polynomial is 2. So to find the zero of the polynomial, to find the zero of the polynomial, what we do, we equate the polynomial with 0. Okay, we equate the polynomial with 0. ओके, तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी एक 0 गिवन है, तो डायरेक्टली हम लोग वो 0, दैट इज 2, it is given, so we will put in place of x, we will put 2. So what it will become? 2 square plus 3 multiplied by 2 plus k. Okay, and this p of 2, it will be equal to 0. Okay, here you will have to write 0. Okay, so what it will become? 2 square is 4 plus 3 2s is 6 and plus k. Now see, 4 plus 6, it is 10 plus k. So the value of k will be what? Minus 10. Few students got plus 10, but it is wrong. Okay, the value of k will be what? Minus 10. Okay, is it clear to you? Is it clear to you? The value of k will be minus 10. See the next one. A quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4. Okay, तो मैंने एक स्टूडेंट का देखा है कि उसने इसको सम ऑफ जीरोस लिया है और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिया है. ही गॉट द रॉन्ग आंसर. ओके, यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद में उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. यहाँ पे क्या गिवन है? A quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4. Okay, directly zeros are given to us. Okay, let the two zeros of quadratic polynomial be alpha and beta. Okay, alpha and beta are the two zeros. So therefore what we can write? Alpha is equal to -3 and beta is equal to 4. Okay, alpha is equal to -3 and beta is equal to 4. Okay, so these two zeros are given. And what we have to write? We have to write a quadratic polynomial. इस पे से हमको quadratic polynomial बनाना है. ओके, तो देखो अभी x, सपोज हमको quadratic polynomial x वेरिएबल में बनाना है, तो what I can do? x -3, okay, in one bracket and x plus 4 in other bracket, it is equal to 0. Okay, it is equal to 0. So अगर मैं ये मल्टीप्लीकेशन करता हूं, why I have written x -3 and x plus 4? Because the zeros are
-3 and 4। ओके, ये हमको लास्ट में मिलता है, तो ये अभी हमको गिवन है, तो इस पे से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी रिवर्स प्रोसेस करना है हमको। ओके, सो व्हाट इट विल बिकम, एक्स स्क्वायर। First term into first term, it is x square. First term into second term, it will become 4x. Then second term into first term, it will become minus 3x. And second term into second term, it will become minus 12, which is equal to 0. Yes, yes, you can also use alpha and beta, but आप उसको polynomial कैसे बनाओगे? Polynomial बनाने के लिए आपको एक ही वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने x वेरिएबल लिया है। Okay, so what it will become, x square plus x minus 12. Many of you have done mistake in this. Okay, many of you have done mistake in this. आप इसको sum of zeros और product of zeros लेके भी इसको solve कर सकते हो. Okay, it's up to you. Is it clear to you? Question number 4. Is it clear to you? Question number 4. If anyone is having any doubt, they can ask me immediately. Yes, yes, Rahul, you can do like that also. See, x square minus alpha plus beta x and plus alpha into beta. Okay, by this way also you can generate the polynomial. Okay, तो यहाँ पे final answer is remaining. Therefore the polynomial is p of x, which is equal to x square plus x minus 12. This is not the polynomial, this is a quadratic equation, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इक्वेट किया है जीरो के साथ, और जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, दैट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, द पॉलिनोमियल इज p of x, which is equal to x square plus x minus 12. Okay, see the next one. The relationship between the zeros and coefficients of the quadratic polynomial. This is the quadratic polynomial which is given to us. Okay, quadratic polynomial, it is what, p of x, which is equal to ax square plus bx plus c. This is our quadratic polynomial, or we can say it is the general form. जनरल फॉर्म भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसा ही होता है, बस यहाँ पे एक कंडीशन ये होता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. अगर a जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, और हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर बोल ही नहीं सकते हैं. और हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है सम ऑफ जीरोस. Okay, sum of zeros, what it is, alpha and beta. If alpha and beta are the two zeros, so sum of zeros will become alpha plus beta, it is equal to minus b upon a. Okay, it is equal to minus b upon a, and b is what, it is the coefficient of it is the coefficient of x. Okay, and a is what, it is the coefficient of x square. Similarly, product of zeros क्या हो जाएगा फिर, product of zeros, it is nothing but alpha multiplied by beta. Okay, because the two zeros are alpha and beta, so product of zeros will become alpha multiplied by beta, which is equal to c upon a. This is the relation, sum of zeros and product of zeros of a quadratic polynomial. Definitely you will have one question in final exam also on this. वो 1 मार्क के लिए आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी. इट्स अप टू देम. ओके, बट डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल बी देयर ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज ये चैप्टर में भी जो डिवीजन एल्गोरिदम था, इट्स रिमूव्ड. ओके, सो ओनली दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर. नेक्स्ट इज व्हाट, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल.
Now the polynomial is what? X square plus 7x plus 10. Okay, so first we will write given polynomial is p of x, which is equal to x square plus 7x plus 10. Okay, this is the given polynomial to us. We have to find the zeros of this polynomial. So to find zeros, what we do? To find zeros of any polynomial, what we do? What we do? Yes, anyone? To find zeros of any polynomial, हम लोग क्या करते हैं? Sir, we will remove the factors. We will equate the polynomial with zero. Okay, we will equate the polynomial with zero. To find zeros of the polynomial, we equate the polynomial to zeros. Equate the polynomial with जीरो. जीरोस फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करना है, इन शॉर्ट. ओके, सो व्हाट इट विल बिकम? पी ऑफ एक्स को हमको जीरो के साथ इक्वेट करना है, और पी ऑफ एक्स क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 विच इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो अभी यहाँ पे मुझे मल्टीप्लीकेशन, नाउ इट बिकेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सी, जब हम इक्वेट कर लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के साथ, तो इट इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अभी यहाँ पे मुझे मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए? आई वांट +10. एडिशन क्या चाहिए मुझे? माइनस, सॉरी, +7. सो टेल मी द फैक्टर्स. What will be the factors? What will be the factors? 5 and 2. Okay, 5 2s are, I will get 10 also, and 5 और 2 से मैं 7 भी बना सकता हूँ. Okay, so x square plus 5x plus 2x plus 10 which is equal to 0. अभी ये दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो बचा क्या? x plus 5. अगेन ये दोनों में से क्या कॉमन है? +2 कॉमन है, तो बचा क्या? x plus 5 which is equal to 0. नाउ ये दोनों में क्या कॉमन है? x+5 और x+5. सो x+5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और बचा क्या है? x+2 which is equal to 0. Now independently equate both these brackets with 0 to get the zeros. Okay, so x+5 which is equal to 0 in the first case, and x+2 which is equal to 0 in the second case. So x will be what? -5, and x will be what? -2. तो ये दोनों क्या मिले आपको? ये जीरोस है आपके. These are nothing but the zeros of this quadratic polynomial. Write down the final statement. Therefore, the zeros of the given polynomial are. See, make a habit to write down the complete statement from now only, ताकि final exam में आपको वो आदत लग जाए. The zeros of the given polynomial are -5 and -2. ओके, और इसी को हम लोग क्या लेते हैं? इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं, और इसको हम लोग बीटा ले लेते हैं, जब भी हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अप्लाई करते हैं. ओके, इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? See the next one, a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are -3 and 2. Now here sum and product of zeros are given. कुछ लोग क्या करते हैं, ये सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिया रहेगा, तो ये दोनों को ही जीरो एज्यूम कर लेते हैं. इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. समवन हैज डन लाइक दैट. आई डोंट रिमेंबर द नेम. ओके, so here what it is given? Sum of zeros. First we will assume the zero. Let the quadratic polynomial has two zeros. Has के जगह यहाँ have आना चाहिए. Have two zeros, alpha and beta.
Okay, let the quadratic polynomial have two zeros, alpha and beta. We have assumed it. Now, what is sum of zeros? Sum of zeros for quadratic polynomial, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमारे दो जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा. एंड सम ऑफ जीरोस इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. Okay, so sum of zeros, that means alpha plus beta, it is directly given to us as minus 3. Okay, and this will become minus b upon a. यहाँ पे 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 एज्यूम कर सकता हूँ. ओके, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आई कैन एज्यूम 1. ओके, so from here what, now wait, don't write directly from here the value of a and b, write down product of zeros also, product of zeros. So what it will become, product of zeros, alpha multiplied by beta, it is nothing but c upon a. So product of zeros, how much it is given to us? It is given as 2. Okay, so 2 which is equal to c upon a. So 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 ले सकता हूं. तो अभी यहां से देखो, from here what I can do, I can compare this value and this value, denominator on both the sides. So इस पे से मैं क्या लिख सकता हूं, a का वैल्यू 2 है, यहां पे भी इट इज सेम, ए का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू 1 आ रहा है. आफ्टर कंपेयरिंग द डिनोमिनेटर्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एज 1. उसके बाद आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी. सो बी इज गोइंग टू कम 3. ओके, बी इज गोइंग टू कम 3. यस, यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो, कसक, नो प्रॉब्लम. ओके, सो बी इज गोइंग टू कम 3, और यहां से हमको सी का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 2. Therefore, what we can write, a is equal to, sorry, a is equal to 1, b is equal to 3, and c is equal to 2. Okay, so the general form, the general form of quadratic polynomial, of quadratic polynomial, what is the general form of quadratic polynomial? It is ax square plus bx plus c. Okay, सपोज पी ऑफ एक्स ये पॉलिनोमियल है तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करना है. ए का वैल्यू क्या आया है हमारा 1, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर. बी का वैल्यू हमारा क्या आया है 3, so this will become 3x and this will become 2. So this is the polynomial, this is the quadratic polynomial, x square plus 3x plus 2. Many of you have done mistake in this, x square minus 3x लिया है किसी ने. सी, आप अगर थोड़ा प्रोसेस से अगर लिखोगे, अगर आप शॉर्टकट में लिखने जाओगे तो डेफिनेटली आपसे मिस्टेक होगा. भले ही 2 स्टेप इंक्रीज होता है बट आपका आंसर एक्यूरेट रहता है. सी द नेक्स्ट वन. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, I think so this question and 10th question was repeated. Okay, so I was not knowing that. I saw it today only while making the PPT. If alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x, which is equal to x square plus x plus 1, then we have to find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या बोल रहे थे कुछ लोग, सर इसके फैक्टर्स ही नहीं आ रहे. ठीक है, नहीं आ रहे फैक्टर्स, नो प्रॉब्लम, आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट यूज कर सकते हो यहाँ पे. ओके, सो गिवन पॉलिनोमियल, फर्स्ट वी विल राइट गिवन polynomial is, what is the given polynomial, f of x which is equal to x square plus x plus 1. Okay, so comparing this with general form, comparing above polynomial with general form, we will get the values of a, b and c. Okay, so what will be the value of a then? Value of a will be 1, value of b will be 1, and value of c also will be 1. Okay,
So we are having the value of a, b and c. Now we will use the concept of sum of zeros and product of zeros. So sum of zeros. Okay, sum of zeros, what it is, alpha plus beta. अगर आपके दो zeros हैं तो sum of zeros is nothing but equal to minus b upon a. Okay, so alpha plus beta, you will get it from here, minus b, so minus 1 upon 1. Okay, so this will become minus 1 only. So alpha plus beta, you are getting minus 1. What is product of zeros? What is product of zeros? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा एंड इट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो अल्फा इंटू बीटा, व्हाट यू विल गेट, सी क्या है आपका 1, ए क्या है आपका 1, सो यू विल गेट 1 ओनली. Okay, so sum of zeros you are getting minus 1 and product of zeros you are getting plus 1. Okay, सो अभी हमारे को क्या ये इसका वैल्यू फाइंड करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा. नाउ सी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट इट विल बिकम, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. करेक्ट. और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है मेरे पास -1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है मेरे पास +1. सी, यू कैन गिव दिस इक्वेशन एज नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन एज नंबर 2. ओके, so from 1 and 2 you can specify the reason also. The final answer it will come -1. Final answer it will come -1. Is it clear to you? Is it clear to you? Okay. Moving forward to the next question. See the next question. If one of the zero of the polynomial f of x, which is equal to k square plus 4 multiplied by x square plus 13x plus 4k is the reciprocal of the other, then the value of k. Okay. See, let 1 0 of the polynomial बी अल्फा. एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अदर जीरो व्हाट इट विल बिकम, अदर जीरो will be equal to what, read the statement given in the question. What it is given, other zero is the reciprocal of the first one, therefore the other zero will become what, 1 upon alpha. Okay, therefore the other zero will become 1 upon alpha. Now see, we will use sum of zeros. Okay, sum of zeros. So sum of zeros क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 upon alpha. Correct, because one zero is alpha and other zero is what, 1 upon alpha. Before applying this sum of zeros we will have to write down the value of a, b and c. So given polynomial को आप सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म के साथ. So k square plus 4 in bracket x square plus 13x प्लस 4k, इसको आप कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म के साथ तो आपको a का वैल्यू मिलेगा k स्क्वायर प्लस 4, b का वैल्यू मिलेगा 13 एंड c का वैल्यू मिलेगा 4k. ओके, someone has taken only 4, you will have to take 4k. Okay, the value of c will be 4k. So sum sum of zeros, it is what, minus b upon a. So what it will become, alpha square plus 1 divided by alpha, which is equal to, now minus 13 upon, this will become k square plus 4. Okay, minus 13 upon k square plus 4. See, now we are not getting anything from here, so we will use product of zeros. Now we will keep this as it is. Okay, give this as equation number 1, so we will use product of zeros. Okay, so product of zeros, what it will become, alpha multiplied by 1 upon alpha, because one zero is alpha and other zero is reciprocal of it. So alpha multiplied by 1 upon alpha, what it will become, c upon a.
Okay, product of zeros is what? C upon A. So this alpha alpha will get cancelled. So 1 will be equal to, what is the value of C? It is 4k. And what is the value of A? It is k square plus 4. Okay. So cross multiply kar do. K square plus 4 will be equal to 4k. Okay. So k square, I will shift this 4k on LHS. It will become minus 4k and this will become plus 4, which is equal to 0. Okay. So this is nothing but the expansion of k minus 2 whole square. Okay. K minus 2 का whole square आप करोगे तो k square minus 4k plus 4 मिलेगा आपको, which is equal to 0. So what it means, k minus 2 which is equal to 0. So from here what I can write, k is equal to 2 and k is equal to 2. See, mention both the values, भले ही value same आ रहा है, but mention both the values. So here k will be equal to 2. Now tell me what will be the value of alpha. What will be the value of alpha? k का वैल्यू मुझे पता चल गया है, मुझे बोलो अभी अल्फा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे. What will be the value of alpha? Yes, please try it. Find out the value of alpha. अल्फा का वैल्यू क्या आएगा अभी? सी, आप अगर ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर k का वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आपको अल्फा का वैल्यू मिल सकता है. यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, उसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं और अल्फा के आपको दो वैल्यूज मिलेंगे. चेक करो भला whether the zeros are coming reciprocal of each other. Find out the zeros of this polynomial after putting the value of k. Check whether the zeros are coming reciprocal of each other. Yes, anyone got it? Can anyone tell me how we can do that? Yes, can anyone tell me how we can do that? सी, ऐसे नहीं होता है कि हम लोग अगर 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया है. हम लोग अगर 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे बट उसमें सारा कंसेप्ट अगर कवर कर लेंगे, इट्स मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज. ओके. Yes, anyone can try how we will get the values of alpha. सी, गलत होता है तो भी नो प्रॉब्लम, बट ट्राई इट. कौन बताएगा मुझे? Who will tell me the answer? How we will do it? सी, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में जो है ना, हमेशा दोनों साइड से इक्वल ये आना चाहिए रिस्पॉन्स. बस मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहो, इट्स नॉट वर्थ इट फॉर मैथमेटिक्स. कम ऑन एनीवन, बोलो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग अल्फा? नो वन. ओके, सी, अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये k का वैल्यू पुट करता हूं. तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा विच इज इक्वल टू -13. अभी यहाँ पे अगर मैं k का वैल्यू पुट करता हूँ दैट इज 2. सो व्हाट इट विल बिकम, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 प्लस 4 इट विल बिकम 8.
सो व्हाट इट विल बिकम 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, दिस विल बिकम माइनस 13 अल्फा. So 8 alpha square plus 13 alpha plus 8 which is equal to 0. Now you can solve it. Okay. अभी तो आंसर बताओ मुझे क्या आएगा अल्फा. What will be, what will be the value of alpha? See what I want in multiplication. In multiplication I want 64. In addition I want 13. So I think so 64 मुझे 8 8 जा 64 मिलता है. उसके अलावा और कैसे मिल सकता है मुझे? 16 4 जा भी मुझे 64 मिलता है. ओके, इट इज नॉट कमिंग यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, बट हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी, हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही सारे आंसर आएंगे हमेशा. Yes, if it is not coming with factorization, apply quadratic equation formula. First, check the nature of roots. First, check the nature of roots. Whether you are going to get. Okay. So for checking the nature of roots, we will have to find the value of d. D is nothing but b square minus 4ac. Okay. तो d क्या आ जाएगा फिर? b क्या है आपका? 13. 13 का स्क्वायर माइनस 4 into 8 into 8. So d is coming what? 169 minus 64 4s are 240 plus 16, 256. Okay. So d is coming negative. Okay. So d is coming what? D is coming less than 0. Or d जब भी less than 0 आता है, we don't get the roots. So we will not get the value of alpha here. Okay. So we will not get the value of alpha. Okay. Rejoin the session. Okay. If the session gets over, rejoin the session. Still we have to complete 2 more questions. So we will not get the value of alpha here. Is it clear to you? Is it clear to you? Rejoin the session.